हेलो स्टूडेंट्स, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी बाय जेम्स हैरियट। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। मिसेस पम्फ्रीज लव फॉर हर डॉग इज एक्सेप्शनल। मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन की वीडियो में भी बताया है कि कैसे हमें पता चलता है कि उन दोनों की बॉन्डिंग कैसी थी। ट्रिकी की और मिसेस पम्फ्री की बॉन्डिंग, उनका लव कैसा था, राइट तो वहां यहाँ पे भी वही बताया कि उन दोनों का जो लव था दैट वाज एक्सेप्शनल, उनकी बॉन्डिंग एक्सेप्शनल थी। डू यू एग्री और डिसएग्री? गिव रीजंस। Right? So, of course, Mrs. Pumphrey's love for Tricky is exceptional. The manner in which she had bought things for his comfort, like cushions, coats, toys, rubber rings, and different feeding bowls, show that he adorned him. राइट, शी अडॉन्ड हिम। तो पता चलता है कि वो इतना सामान उसके लिए उन्होंने लेके रखा है कि वो उसे कितना प्यार करती थी। However, when her excessive love ruined his health, लेकिन उसके उनके एक्सेसिव लव ने ही उसकी हेल्थ खराब कर दी। शी डिड नॉट हेजिटेट टू गेट हिम मेडिकल हेल्प इंस्टेंटली। लव अपनी जगह है, लेकिन जब तबीयत खराब होने लगी तो उन्होंने एक मिनट भी देर नहीं की और उसकी मेडिकल हेल्प लेना उन्होंने जरूरी समझा। राइट, सो दिस वॉज देयर लव। जो उन्होंने जब उसकी तबीयत खराब हो गई और फटाफट मेडिकल हेल्प भी लिया, दैट वॉज ऑल्सो आउट ऑफ लव। Right? So next question, what made Harriet conclude that Tricky had never had such a time in his life as he had at the surgery? तो कैसे हमें पता चलता है कि सर्जरी पे उसने जितना एंजॉय किया है उतना कभी उसने नहीं किया है? So Harriet observed that Tricky too fought like a tiger with the dogs at the hospital for his share at meal times and hunted rats with them in the old hen house at night. So ये दो बातें तो बहुत जरूरी हैं, इसको as it is आपको लिखना है कि किस तरीके से उसने रैट्स को हेन हाउस में रात को चेज करता था, प्लस खाने के लिए ही यूज्ड टू fight like a tiger for his share of meals, right? So this fun-filled life of Tricky made Harriet conclude that the dog had never had such a time in his life. इसी से हमें पता चलता है। नेक्स्ट, नो पेन नो गेन इज अ पॉपुलर सेइंग। इन व्हाट वे डज दिस स्टोरी मेक इट रिलेवेंट? So this saying is relevant to the events in the story as Tricky regained strength and fitness and after undergoing फिजिकल स्ट्रगल। और वो फिजिकल स्ट्रगल क्या था? भूखे रहना इतने दिन तक, उसको सिर्फ वाटरी पे फूड पे रखा था, सिर्फ वाटर पे रखा था एंड नो फूड। सो जब उसने इतना पेन लिया तब जाके उसको उसकी फिजिकल हेल्थ थोड़ा इम्प्रूव हुई। If he had not been made to fast and to wean off chocolates and horlicks, अगर उसको फास्टिंग नहीं कराई गई होती, अगर उसको चॉकलेट्स, हॉर्लिक्स और मॉल्ट से दूर नहीं रखा गया होता, he wouldn't have become a strong and active dog. वो स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बन ही नहीं पाता। His pain certainly helped him to gain strength. और इसीलिए ये जो पेन था इन सब चीजों से दूर रहने का, उससे उसको स्ट्रेंथ मिली है। राइट, मिसेस पम्फ्रीज फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रिविलेज एंड नीड लैंडेड ट्रिकी इन ट्रबल। प्रिविलेज और नीड में क्या फर्क है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाए, इसीलिए ट्रिकी जो है ट्रबल में आ गया। एक्सप्लेन। So Mrs. Pumphrey was a rich woman who had the privilege to afford so many things, the most exotic care of the dog. वो rich थी इसीलिए उसके लिए वो exotic care afford कर सकती थी, right? This confused her about the actual need of the dog to maintain good health. और इसीलिए उसको वो कंफ्यूज हो गई कि एक्चुअल डॉग की हेल्थ के लिए क्या जरूरी है। क्या डॉग्स आर मेड टू स्लीप ऑन दोज कुशंस? आर दे मेड टू वियर दोज कोट्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स? Are they made to feed the bulls according to the meals? No, ऐसा तो कभी भी नहीं है। She interrupted Tricky's little listlessness as malnutrition. वो भी कंफ्यूज हो गई, जो उसका ओवर फीडिंग था, उनको लगा कि वो उसकी हेल्थ जो खराब हुई उसको वीकनेस की वजह से हो रही है, बल्कि वो वीकनेस या malnutrition नहीं था, he was overfed, right? And overfed him with little extras between the meals. It was this confusion on her part that landed Tricky in serious trouble. यही कंफ्यूजन था जिसकी वजह से ट्रिकी की सीरियसली तबीयत खराब हो गई थी। Was Tricky's recovery really a triumph of surgery? क्या ये सच में एक सर्जरी की जीत थी? Now Tricky's recovery was a result of proper diagnosis. ट्रिकी की जो ये तबीयत ठीक होना था, ये प्रॉपर डायग्नोज था जो डॉक्टर हैरियट कर पाए, बिकॉज ही वाज ऑब्जर्विंग हिम सिंस लास्ट सो मेनी डेज, एंड एक्यूरेट ट्रीटमेंट बाय अ कॉम्पिटेंट वेटनेरियन।
right? The recovery was a triumph because convincing Tricky's overindulgent owner to get him treated was difficult. आप कैसे मिसेस पंफ्री को कन्विंस करते कि इसको इस चीज की जरूरत है या इसको कम खाने की जरूरत है, वो कन्विंस नहीं हो रही थी, राइट? तो ये एक बहुत ही ट्रिकी पार्ट था कि उनको ये समझाना, किस तरीके से कन्विंस करना, जो डॉक्टर हैरियट ने बहुत ही बखूबी किया कि उसको बोल के कि इनको ऑब्जर्वेशन के लिए रखना पड़ेगा या सर्जरी में रखना पड़ेगा, राइट? So ironically, the triumph didn't come from the complicated procedure of surgery, but from a lifestyle change and lots of exercise and balanced diet. तो कोई सर्जरी की जीत नहीं थी, उल्टा क्या था, that involved कि उसकी एक बैलेंस डाइट हो, एक लाइफस्टाइल में चेंज हो, मोर ऑफ एक्सरसाइज, फन, और जैसे बाकी डॉग्स रहते हैं वैसे रहा जाए, ये उसकी जीत थी. Dr. Harriet knew his patients as well as his their owners really well. So Dr. Harriet को अपने पेशेंट्स के बारे में भी पता था, यानी कि ट्रिकी के बारे में, और उनके जो ओनर्स थे उनके बारे में भी पता था, ठीक है? So Dr. Harriet, an accomplished veterinarian, could understand the problems of his patients just by observing them. Right? He saw Tricky and immediately understood that silly pampering and overindulgence needed help from him. He also understood that Mrs. Pumphrey could not be advised or reprimanded for Tricky's condition. उनको आप reprimanded का मतलब डांटना, ना तो आप मिसेस पंफ्री को डांट सकती हैं क्योंकि वो स्ट्रिक्ट ही नहीं हो पाएंगी, ठीक है? तो एक्चुअली में मिसेस पंफ्री ही अगर आप कहें कल्प्रिट है ट्रिकी की इस कंडीशन के लिए, राइट? So long conclusion, Mrs. Pumphrey's concern for Tricky was excessively overindulgent and was nothing short of mania. Right? Discuss. So Mrs. Pumphrey's concern for Tricky was nothing short of mania. She behaved like an overindulgent mother, right? Overindulgent mother, and made a very elaborated wardrobe for him. Tricky had different coats for winter and rainy days, and his beds for day and night were also different. Similarly, he had separate bowls for breakfast, lunch, and supper, and he had lots of toys, rubber rings to play. Right? The food served to him at home was unimaginably varied and rich. He was even fed desserts like cream cakes and chocolates, and was pampered with supplements like उसको क्या क्या और दिया जाता था, malt, cod liver oil, and Horlicks. जो वर्ड्स में सारे अंडरलाइन कर रही हूँ, आप इनको लर्न कर लीजिए प्लीज, right? Her mania for her pet's health was evident again when she started sending ample supply of fresh eggs वो भेजना शुरू कर दिया, और उसके बाद bottles of wine and brandy देना शुरू कर दिया at the hospital to tone up with his health. Right? All this proves that Mrs. Pumphrey's concern for Tricky was nothing short of mania. ये सब प्रूव करता है कि जो उनका प्यार था वो कुछ ज्यादा ही था. शी वॉज ओवर इंडल्जेंट, वो एक मेनिया था. Right? Next question. Compare and contrast Tricky in the beginning and in the end of the story. So in the beginning of the story, Tricky was excessively obese. Beginning में वो बहुत मोटा था, bloodshot था, right? He had roomy eyes. He was nothing like a bloated sausage and walked with great difficulty. He looked like a, ये देखिए, bloated sausage with bloodshot eyes, lolly tongue for his jaws. In the words of Mrs. Pumphrey, he was listless. Owing to overfeeding by his owner, he had become a glutton who never refused food. His physical mobility was too little and he wasn't given any regular exercise either. Thus, he fell ill, lost all the interest in food, and suffered bouts of vomiting. The situation became so bad that he had to be hospitalized. However, a fortnight supervision by the expert veterinary surgeon Dr. Harriet and a strict diet with excessive regime eventually cured him of his ailment. Ailment matlab jo bimari hai, right? Suffering. He began to behave like a normal dog and started participating in all the activities like another dogs. This made him agile, strong-muscled, and healthy in the end. Right? So जो भी उन्होंने lifestyle changes किए और उसकी exercise को include किया, तब जाके वो एक normal dog बन पाए. Right?
Excesses of everything is bad. Discuss the truth of this statement with reference to Mrs. Pumphrey's love for Tricky. So, excess of everything is bad is a statement that stands absolutely true with regard to Mrs. Pumphrey's love for Tricky. ये बिल्कुल true है, right? She was a rich woman who could afford every possible comfort for the pet. To show her love for Tricky, she always depended on things that money could buy. उसको comfort देना चाहती थी. In the process, she overlooked the need of a strict diet and ample of exercise regime. The ill effects of her overindulgence made Tricky excessively fat, and he began to look like a bloated sausage. He walked with grave difficulty and lost all interest in things around him. Still, Mrs. Pumphrey failed to realize the seriousness of the matter and kept on giving him little extras between the meals. अब आपको पता है वो little extras क्या क्या थे, right? He loaded him with cream cakes and chocolates simply because she couldn't bear to refuse him. मनाही नहीं कर सकती थी. On top of it, the dog wasn't given any exercise to stay fit. This worsened the dog's health. If Dr. Harriet had not intervened at the right time, Mrs. Pumphrey's love have possibly led to Tricky's death. अगर वो सही टाइम पे डायग्नोज नहीं किया होता तो वो शायद उसकी डेथ ही हो जाती. Therefore, excess love of Mrs. Pumphrey for Tricky was certainly bad both for dog and herself. दोनों के लिए ही जो ओवर इंडल्जेंस था या एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो वो उनके लिए सच में बैड बनता. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन द नरेटर्स प्लेस? अगर आप नरेटर की जगह होते तो आप क्या करते? अब इसका आंसर आपको चैप्टर के बीच में से नहीं लिख बनेगा, आपको ये खुद लिखना पड़ेगा, बट ऑलवेज कनेक्टेड टू द चैप्टर. सो इस तरीके से लिख सकते हैं, had I been in the narrator's place, I would have treated Tricky exactly in the same manner as Dr. Harriet does. However, I would not have feasted on the delicacies sent by Mrs. Pumphrey for Tricky. हाँ, ये हो सकता था कि जो मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के लिए डेलिकेसीज भेजती थी, वाइन, ब्रांडी, एग्स, मैं वो सब नहीं कंज्यूम करता. दिस इज अनप्रोफेशनल एंड अनएथिकल. I would have sternly told her that pets were not to be given such things. मैं उनको वार्न कर देता कि आप आगे से ना भेजें क्योंकि पेट्स को ये सब चीजें नहीं देनी होती हैं. ठीक है. ट्रिकी गोज बैक होम, सच एन इंडल्जेंस वुड मेक हिम इल अगेन. उन्हें ये चीज सिखानी पड़ेगी कि आपको ये चीजें नहीं देनी है, क्योंकि अगर मेरे ठीक करने के बाद आप दोबारा उसको ये सब फीड करेंगी तो वो दोबारा मोटा हो जाएगा. I would have told her in detail the ill effects of giving wine or brandy to pets. In fact, I would have given her a menu for Tricky with strict instructions that the dietary chart was to be followed religiously. मैं उसका एक डाइट चार्ट बना के देता जो स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना था. I would also have stressed on the need to give regular physical exercise to the pet. और अगर मैं सम अप करूं, I would not have minced words to tell the rich lady that she herself was to be blamed for dog's ill health. मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं शर्माता और बिल्कुल भी अपने वर्ड्स को मोल्ड करके नहीं बोलता. रादर आई वुड हैव गिवन स्ट्रेट टू द लेडी कि आपकी ही वजह से आपके डॉग की तबीयत खराब हुई है. राइट. अगर आप नोट करेंगे तो इसमें बहुत सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो रिपीट हो रहा है. उसकी हेल्थ कैसी थी, उसके स्टफ क्या क्या उसके ओवर इंटेलिजेंस में दिया जा रहा था, खाने के बीच में मॉल्ट हॉर्लिक्स दिया जा रहा था, और उसके बाद ड्यूरिंग द सर्जरी उसको क्या क्या मिसेस पम्फ्री सामान भेज रही थी. सो उन्हीं वर्ड्स को और उन्हीं उसके अपीयरेंसेस को बार बार इसमें यूज किया जा रहा है. अगर आप ये कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, आई एम श्योर इनसे रिलेटेड कोई भी और अगर क्वेश्चन आंसर्स आते हैं आप उनको आंसर कर पाएंगे. राइट. सो अगर लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको आप नहीं फ्रेम कर पा रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको आंसर फ्रेम करके भेज दूंगी. राइट. थैंक यू.